लास्ट वीक एक डिस्कशन किया था, उसी का ये पार्ट 2 है। और जैसे हमने फर्स्ट वेबिनार के अंदर कि आरबीआई क्या चाहती है, क्यों चाहती है, कैसे करना चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, और हम क्या कर रहे हैं या मतलब कि स्किप कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आज वही सेम वेबिनार का सेशन 2 है। और आज का जो सेशन है वो मिस्टर प्रकाश कपूर, ही इज एक्स एजीएम RBI and currently working with the 50 plus bank for the guidance, advice, compliance and related to assessment or audit. तो बहुत सारी बैंक पहचानती है उनको, और जो लोग नहीं पहचानते उनके लिए मैंने जस्ट आज उनका एक इंट्रो रखा था। तो ये आज का जो वेबिनार है उसका हमारा पर्पस वो है कि ये जो आरबीआई की तरफ से अभी रिसेंटली बहुत सारी बैंकों में इतनी सारी पेनल्टी आ रही है, तो वो पेनल्टी हमारे यहाँ वो नॉन कंप्लायंस की वजह से नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो पहले हम लोग एक कपूर सर का पूरा डिस्कशन करेंगे, मतलब कि कपूर सर पूरा एक एक पॉइंट पे हमारे साथ डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखेंगे। इन बिटवीन अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ऐड कर दीजिए। आफ्टर द प्रेजेंटेशन, उनका एक बार पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे, और ये जो पीपीटी या जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो भी हम आपको शेयर करेंगे। सो डोंट वरी कि हम लोग सब कुछ आपको शेयर करेंगे। इवन तो आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए किसी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, तो वी कैन शेयर ईमेल एंड फोन नंबर ऑल्सो। सो ये वेबिनार का पर्पस हमारा वही है कि जिस वजह से आरबीआई अभी मैक्सिमम पेनल्टी दे रही है, वो पेनल्टी हमारे यहाँ नहीं आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रेजेंटेशन श्लेषा आप स्टार्ट कर सकते हैं पीपीटी। एंड कपूर सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर आप अपना सेशन स्टार्ट करें। एंड सर इन बिटवीन कुछ भी है तो कोई आंसर या क्वेश्चन कुछ भी किसी को है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग लास्ट में सारे क्वेश्चन आपके रीड करके आपको सॉल्यूशन भी देंगे, और इफ रिक्वायर्ड मोर डिटेल और मोर डिस्कशन तो आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह भी शेयर करेंगे, जिससे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझना है तो आप बात कर सकते हैं। सो कपूर सर, नाउ आई एम गिविंग माइक टू यू सर। Thank you so much for coming, sir. Thank you, Ravi. Good evening to all the members who have joined this webinar. अभी हम शुरू करने से पहले ये कहेंगे कि आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक से क्या चाहती है, और पर्टिकुलरली इंस्पेक्शन आरबीआई का जो होता है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो ऑब्जर्वेशंस किस रिलेटेड ज्यादा होते हैं। पहले बरसों पहले डायरेक्टर रिलेटेड लोन्स इश्यू थे और ढेर सारे अदर रेगुलेटरी इश्यूज थे। ऐसे भी इश्यूज थे कि कोई कोऑपरेटिव बैंक सीआरआर एसएलआर भी मेंटेन नहीं कर पाती थी। Excuse me, sir. Please use, sir. Please use English language, sir. We are not follow with Hindi. आप अंग्रेजी में बोलेंगे? Sir, how many are there who don't understand Hindi? Sir, we are from Kerala, Kottakkal Urban Bank. अच्छा, so English Hindi mix चलेगा? कि only? No, sir, English. Only English, Ravi? Sir, we can mix up Hindi English. हाँ. Yeah. I will repeat important words in English and either in Hindi. Okay, you don't worry, because we have other audience also. I have seen many are from Gujarat, many are from Maharashtra, Rajasthan. Okay, it will be mixed. Hello. Sir, yes sir, Hindi English mix. Should I continue? Yes sir, very well. Okay, आप सर हिंदी इंग्लिश में आप करिए सर।
Okay. I will continue. Thank you. Okay. Yes. So we'll start the slide. As I was telling, RBI gives importance now to corporate governance. Earlier, many issues were there. Long ago, CRR, SLR were not maintained. CRAR was not maintained. The financial position of many cooperative banks were weak. Now, the position has improved a lot because our Indian economy has improved and urban banks also have expanded like anything. They have developed, they have increased their branches, their deposits have increased, their advances have increased, and nowadays old generation UCBs staff has been replaced by young generation. So now the issues are different because Urban Cooperative Bank has adopted digitalization. They have adopted, many cooperative banks are direct member of CPS. Otherwise, they are sub-member as CTS. They have started RuPay card, ATM card, and they have started NEFT, RTGS, and various digital like mobile banking and internet banking. So issues have now different because change is the law of nature. So change has taken place in Urban Cooperative Bank also. Now the most important item today we'll discuss regarding the Inspection Audit System and compliance. Now corporate governance has taken important place in Urban Cooperative Banks because other issues have got resolved. So Reserve Bank changes their tendency. Now they have given more importance to internal audit control system and the compliance. Now RBI is coming many master directions. Previously master circulars were issued on 1st of July. Nowadays they issue mostly on 1st of April because financial year of the RBI has changed. Now we'll discuss the circular which is 17/2015. Circular number 3, Inspection and Audit System. It is a master circular. Recently, it is seen that because RBI has started giving importance to inspection, audit, and compliance, so they have issued show cause notices for the not adhering to this circular, not following this circular. So RBI has imposed even penalties also. Another thing is, if you want to become financially sound, well-managed bank, your internal control system should be sound. All the parameters of financial sound, well-managed bank you can achieve. But RBI is giving importance on the internal control system. Many of the urban cooperative, though financially sound, have not got the financial sound, well-managed bank status because RBI is denying on the ground that your internal control system is not sound. We'll discuss internal control system by giving emphasis on internal audit, Concurrent Audit, EDP audit, ISO audit, and VAPT audit, and Audit Committee of our board. Now, internal audit. See, every organization wants to grow. If you want to grow, you have to take many measures. Now RBI has changed their approach from camel system to risk-based system. So risk-based audit, internal audit is compulsory for the banks whose assets is 500 crores and above. Internal audit is a must. Hadi? Internal audit is a must for every bank. Particularly, we are talking about cooperative banks. If any other cooperative banks have also joined, they are welcome. These guidelines are also applicable to them. Generally, UCB conducts internal audit
many of them conduct on monthly or quarterly basis, and depending upon the size of the branches. Also, whether it belongs to Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Tier 4. Tier 3 and Tier 4 banks are very particular for the internal audit because they are mostly, particularly Tier 3 and 4, they are mostly who are having 500 crore asset size, started risk-based internal audit. Internal auditor should be from internal staff only. RBI gives preference to that, but you can go for external also. But the thing is, the same fellow should not conduct internal audit as well as concurrent audit. The firm should be different, at least. And you have to rotate the firm. Next slide. We'll talk about coverage of internal audit. Internal audit should cover all the entire control system. They also ask, they means RBI inspector also ask you various periodical returns which you have submitted to from branches to head office and from head office to RBI. Internal auditor should have a surprise type of audit. So their scope is very wide. He can go for cash vault operation of the lockers, and whatever irregularities are observed in cash, he can bring it to the notice of the branch manager immediately. Various irregularities can be sorted out while carrying out the internal inspection, internal audit. RBI is using the word internal inspection. It is nothing but internal audit, we can call it, because we are used to call RBI stated inspection as an inspection. Others are called as an audit. So internal audit, likewise concurrent audit, and now RBI is also giving emphasis for many big, large size urban banks to go for credit audit and revenue audit, revenue leakage audit. Okay, sir. Now, those areas which are corruption or fraud prone, the internal auditor has to give more emphasis at. He has to go through the pre-sanction, post-sanction, all the loan files. He cannot see all files, but he can go through, and he can go through the authority of the sanctioning authority, and coverage is for sundry account, space account, and reconciliation in inter-branch accounts. Even your accounts with HDFC or ICICI or SBI be balanced and reconciled, and all the charges, whatever they have inflicted upon the urban bank, the officer should verify those charges, at least the charges which are above certain amount, which runs into lakhs of rupees or thousands of rupees. Recently, RBI has come out with an internal accounts circular. It was observed that many banks were misusing the internal accounts. So, internal accounts, who is opening those accounts, who is operating those accounts, how many accounts are internal accounts, should be given to the board. That, and the board should have a policy for opening of the internal accounts, because RBI has detected various irregularities in the internal accounts maintained by certain urban cooperative banks. We will not name any bank. Okay, next slide. There is also the duty of the internal audit to see the compliance of IRAC and provisioning norms. Whatever the one is correct or not, nowadays almost every cooperative bank has switched their module of NPA to online IRAC and provisioning norms. Automatically, ongoing base, they detect the NPA accounts, and NPA accounts on their periodicity switch on
and from substandard to D1, D2, D3 likewise. Then thereafter, internal auditor has to see customer service. Customer service includes complaint redressal system, customer meeting on quarterly basis with the branches, and thereafter the compliance of the complaints, and also the ambiguity about the services provided by the front desk operator. At least senior citizens should get priority in services. Thereafter, internal auditor has to risk categorization and risk for the irregularities in stationary accounts and dead stock accounts, inflated invoices or repeated articles. In one urban cooperative banks, the tube light chalks, which were old, were purchased by urban cooperative bank. As development takes place in each and every field, so in electricity and electricity apparatus also, now AC, fans and fans regulator and bulbs and the tube lights and tube lights, they purchased obsolete tube lights, obsolete their containers. So RBI has raised a question then. Certain irregularities are in dead stock accounts also, should be verified by the internal auditor. Sometimes RBI inspection, in their inspection report, points out the irregularities, and they specifically mention why internal auditor or concurrent auditor has not brought out this irregularity in their report. Thereafter, I said about revenue audit leakages. Revenue audit leakages, wherever your charges, for example, your discretionary and non-discriminatory, it should not have any difference between two borrowers. And मन आवे ऐसा नहीं करने का, किसी को कितना पेनल्टी, किसी को कितना पेनल्टी, penal interest, penal charges. Now there is no penal charges. Thereafter, he has to see investment portfolio also. So many big banks like Saraswat Bank and Cosmos Bank, there is an investment portfolio audit done by their auditors. Internal auditor has to see gold loan accounts, their gold bags. He is not supposed to open the bags and verify the jewelry or the valuation or the carat. Okay, but at least the bags, number of accounts and number of bags should tally with them. Next. Now RBI says, okay, you are conducting audit, but audit is never ending. Internal audit हुआ, concurrent audit हुआ, report आया, report फाइल करके रख दिया, कई बैंक्स रिपोर्ट पढ़ा, रिपोर्ट ने उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिख के सिग्नेचर सीईओ करके रख देते हैं, पर उसका कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है. RBI is asking many banks कि आपका रिपोर्टिंग जो है, एक तो कॉन्करेंट ऑडिट का कॉन्करेंट नहीं है, इंटरनल ऑडिट का कोई कंप्लायंस नहीं किया है, व्हाई यू आर नॉट डन कंप्लायंस. सो देयर शुड बी अ टाइमलाइन. फॉर एग्जांपल, लास्ट done within the next week of the preceding month. So at least it should be immediate, and immediate within 3 days, 5 days or 7 days, report should be submitted to the either chairman or audit committee of the board, and should be through CEO reach the branch immediately, and branch should comply within 2-3 days. And the auditor should also give their closure certificate. In urban banks, there is a very system in very few banks where the closure of the internal audit or concurrent audit or even statutory audit is
report is found. Closing report is missing in many banks. They say we have complied it, but there should be a signature or closer remark of the auditor on their report. Next slide. Now we'll talk about concurrent audit. In a bank, small bank, having one branch, for not conducting concurrent audit on concurrent basis. So concurrent base पे होना चाहिए. RBI called them and their personal hearing, they pleaded very well and they said, we are small banks, we cannot afford the concurrent audit on same day or within a week. We can conduct concurrent audit on monthly basis. It is impossible for us to say any chartered accountant firm to sit in our office and carry out the audit of all the transaction of today or of last 1 week. It is not possible because we cannot afford the fees and there's no fraud in our bank has taken place. But RBI had issued show cause notice, and after their proper presentation and oral representation, personal hearing, they waived any penalty, and penalty was not imposed on that cooperative bank. But they gave undertaking, board gave undertaking that we will fix timeline. Within 3 days, this will be done. Within 3 working days, this will be done. Within 7 days, this will be done. And report will be closed on so and so days. And they are following now. They have to follow because they have given in writing to RBI. Now, we'll discuss about concurrent audit. Why concurrent audit is important? Concurrent audit is important to detect any irregularity of high amount or corruption or fraud, just to prevent the fraudulent transaction. Concurrent audit is important and it should be done by outsider, mostly by chartered accountant. Bank has to decide branches for monthly or quarterly audit. Large size branches are done audit by monthly base and others on quarterly base. But bank has to decide coverage of audit. RBI, this inspection in this circular has given about the coverage. You can check out from my this PPT where all the coverage points are included, and you see that these points are covered in your inspection report of internal audit report and also in concurrent audit report. So we'll see that how the bank can do well in conducting internal audit and concurrent audit to avoid any show cause notice or to avoid any penalty, even to avoid any adverse remark in the RBI inspection report with regard to any internal audit or current audit lacunae or irregularities. Now, there should be a compliance procedure and rectification procedure followed by the bank, and it should be appropriate and quick decisions of management for the report. If any high type of irregularity is detected, which requires high amount of funds or a decision for important any irregularities aspect. So it may take time, but the decision should be taken by the board as soon as possible. Next slide. Concurrent audit is at the same time concurrent, साथ. It is for helping branches following the prescribed system and procedure. It is for the betterment of the कर सकते हैं सर? Yes, sir.
It is early warning system for timely detection of lapses and irregularities. Now, how to prevent fraudulent transaction branches? So it should be done preferably by outsider. As I said, it should be done as early as possible. And bank has to decide coverage of audit, appropriate reporting. Next slide, please. Now, review. Once in a year, the board has to review the concurrent audit system and to control the deficiencies, if any, to improve it. Now, what happens in any urban cooperative bank? A same concurrent auditor goes on for a number of years. RBI takes objection, and where there are more than 2-3 branches, they should reshuffle the auditors. One auditor, one firm of audit for one bank, one branch, or 2-3 branches. Where branches are more, 3-4 concurrent auditor may be appointed. And because same auditor for same branch for same number of years, RBI is taking objection. It should not be there. It is for the betterment of the bank and branches. Now, it should be carried out as near to occurrence of transactions, as I said, to see that the transactions are within board approved policy. Auditors has to see that board approved policy और RBI instruction के हिसाब से ही काम होना चाहिए. The transaction should be within their delegated authorities. उनकी जो authority है, for example, एक चेयरमैन की अथॉरिटी 5 लाख तक है, तो चेयरमैन को 5 लाख से ज्यादा अकेले सिग्नेचर में किया है, या सीईओ की 5 लाख है, या लोन कमिटी की 50 लाख है, तो 50 लाख तक ही किया है कि ज्यादा किया है, कम किया है, उसकी डेलीगेटेड अथॉरिटी जो उसके अंदर ही उनको लोन सैंक्शनिंग करना है. और भी अथॉरिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट की, डीलर्स की अथॉरिटी, जैसे कोई ट्रांजैक्शन डील करना है वगैरह. नाउ फॉर हेड ऑफिस डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट टेक्स प्लेस इन हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस का भी कॉन्करेंट ऑडिट, फंड मैनेजमेंट, इंटरबैंक बोरोइंग, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, और दिस प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वाउचर्स बराबर बनाते हैं कि क्या वगैरह. नेक्स्ट एज नेक्स्ट स्लाइड, इन्वेस्टमेंट पूरा हेड ऑफिस का भी कॉन्करेंट ऑडिटर को देखना है. इंटरनल ऑडिटर इतना डीप में नहीं देखेगा जितना कॉन्करेंट ऑडिटर को देखना है, बिकॉज ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन एंड ही हैज अ एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट ऑफ अदर बैंक्स आल्सो. तो बैंक हैज डेलीगेटेड पावर्स जो है डीलर के, उस हिसाब से किया है कि नहीं किया है. फिर सिक्योरिटीज दे हैव टू टैली फिजिकली, अगर है एसडीएल में है तो उनके साथ आपको जो बैंक के साथ डीमेट अकाउंट है, या एसडीएल सीएसजीएल आरबीआई के साथ एसजीएल और सीएसजीएल एचडीएफसी या कोई बैंक के साथ है वो वगैरह, और डीमेट अकाउंट के जो शेयर्स हों, नॉन एसएलआर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल इसके स्टेट के शेयर्स कोऑपरेटिव बैंक्स के, तो सेल परचेज ट्रांजैक्शन आर डन एट अ रेट बेनिफिशियल टू द बैंक. इवन दे हैव टू गिव quarterly report regarding correctness and investment reported to RBI. Next slide. Now branches में जाएंगे तो वो डेली कैश ट्रांजैक्शन भी देखेंगे, उसमें एबनॉर्मल रिसीव और पेमेंट है कि क्या हुआ है, whatever is there, proper accounting in inward and outward cash remittance, and also expenses paid by cash involving large amounts. Sometimes many a bank like ICICI, HDFC, they charge large amounts for depositing cash, for depositing small currency notes. So that has to be verified by the concurrent auditor. फिर deposits में भी उनको देखना है, interest rate paid जो किया है डिपॉजिट पे सीबीएस करता है. पर इवन सीबीएस में भी अगर कोई गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, किसी ने कोई मिस्टेक डाल दिया, 4% सेविंग की जगह 4.5% सेविंग में लगा दिया, 3% की जगह 3.5% लगा दिया और कंटिन्यू किया, वो नहीं चलेगा. उन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपना डिक्लेयर किए हों बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी से या रिजोल्यूशन से, तो उस हिसाब से परसेंटेज चेक करना है.
KYC चेक है, आगे आएगा CKYCR, ये सब मैं उस टाइम करूंगा बात। और न्यू अकाउंट्स ओपन हुए हैं तो उसमें कोई एनुअल ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और अदर बैंक्स, दे आर सपोज टू चेक न्यूली ओपन अकाउंट द ट्रांजैक्शन फर्स्ट 3 months, 4 months or 6 months. नेक्स्ट स्लाइड। एडवांसेस में भी उनको देखना है, सैंक्शनिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस कौन से सैंक्शन किए हैं और उनकी खुद की लिमिट। फॉर एग्जांपल कितने रियल एस्टेट परसेंटेज जाता है, अनसिक्योर्ड है तो उनकी क्या कैपेसिटी है। अनसिक्योर्ड में उनका 2 लाख का है तो 2 लाख से ज्यादा अनसिक्योर्ड तो नहीं दिया है, 5 लाख है तो 5 लाख से ज्यादा अनसिक्योर्ड तो किसी में नहीं है। और उसके अलावा सिक्योरिटी में वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, क्लियरेंस, बड़ी अमाउंट के जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बैंक एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी ब्रांच है तो 1 करोड़ एंड अबव, छोटी है तो 50 lakhs एंड अबव, उससे छोटी है तो 25 lakhs एंड अबव, और बहुत छोटी है यूनिट है तो 5 lakhs 10 lakhs एंड अबव। तो इनको कॉन्करेंट ऑडिटर को ये सब उसमें चेक करना है जितना हो सकता है। वो बड़े अकाउंट 100%। Speaker not found. Hello, should I continue? Seor Mercantile Bank. Yes, sir. Seor Mercantile Bank, please mute your mic. Yes, sir. You continue, sir. Security and documents have received a properly charge registered. अभी क्या होता है, sometimes urban cooperative banks chairman and board sanctions the loan, and while sanctioning, before disbursement you collect such and such documents. So such and such documents have been received or not before disbursement. This concurrent audit take place after disbursement of the amount, but after the loan is sanctioned by the board and disbursed, the time between whether the documents have been correctly collected or not and registered or not, सरसाई वगैरह में रजिस्टर करना होता है, it takes some times because same नहीं होता। रवि भाई वॉइस बराबर नहीं It आता। takes sometimes like 3 days, 4 days, 2 days. Okay. Kapoor sir? Yes. Hello. Kapoor sir. Sir, there is an internet issue. वो थोड़ा आपका आवाज अभी आप तो ब्रेक Yes, sir. नीचे आवाज Now, कपाई છે yes. રવિ ભાઈ, आवाज कपाई છે રવિ भाई। Yes, sir. Not yet, okay. sir. Yes, Kapoor sir. You can Now start, it sir. will not. It will not. Now it will not. I think. हाँ, इंटरनेट का वो थोड़ा कम है रवि। Okay. No problem, sir. You Will continue, sir. be restored. Yes, sir. And I will continue. I think I am audible. Yes, sir. We were talking about the post-sanction follow-up is proper. Now a stock statement, installment, renewal limits, EMI, though everything is computerized. You can talk about 25 years, 30 years or 40 years ago. There was no computerization. Before computerization, before CBS, everything was manual. When everything was manual, the staff was aware of many things. Many things means they were knowing banking, proper banking, and the day-to-day issues. Now, because of CBS, because of clicking of the mouse, and urban banks, even though I can say they are little bit aware of many things, but if you will go to SDFC or ICICI Bank, where a person is given one laptop, one mouse, and one area to look after, so he is not aware of many other issues, many other instructions of RBI. They are not, you can say, knowing whatever is required of a banker. They are expert in delivering whatever they are asked. But urban bank, उसको बोलते हैं सब बंदर के व्यापारी। एक CEO
उसको ढेर सारी चीजें देखनी पड़ती है। Okay, sir. Then it comes to end use of fund. End use of funds is a very important thing, because after you disburse your amount, where the amount has been utilized. Now, RBI is giving importance to related party transactions. Recently, I have come across last year 2024 reports and 2025 reports, which have started. Kapoor sir, your mic is mute, sir. Kapoor sir. Sir, your mic is mute, sir. अच्छा, Hello. ओके, कब से हुआ? Yes. Yeah. अच्छा, Sir, बस just हुआ sir. Yes, sir. Okay. So I was talking about end user fund. So end user fund में अभी वो related party transaction देखती है। कई बैंकों में चेयरमैन ने अपने एक समझो एक बोरोवर, जो बाद में बोरोवर बना, एक XYZ को 5 लाख रुपए दिए चेयरमैन ने, और वो 5 लाख रुपए वो नहीं दे रहा है, तो चेयरमैन क्या करते हैं, उसको अपनी बैंक से 5-10 लाख रुपए लोन देते हैं। फिर फर्स्ट एंट्री क्या आती है, उस बोरोवर की 5 लाख की एंट्री सीधा चेयरमैन के अकाउंट में। ऐसे ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ऐसे इश्यूज भी पकड़े गए हैं। इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इफ द transactions of the borrower are related with any of the director, then RBI says this is irregularity, because this is not directly director related loan, but this loan is where the party is related to the director. Relation में नहीं है, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, बट रिलेशन ये है कि ट्रांजैक्शन का रिलेशन। तो पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड में भी आरबीआई ने ऑब्जेक्शन निकालने शुरू कर दिए। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा जो अनुभव है कि नाउ डेज आई थिंक आरबीआई में जो कंप्यूटर लिटरेट यंग जनरेशन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स हैं, वो एक्सेल में इतने सारे टूल्स यूज करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की क्या क्या ढूंढ के निकालते हैं। समुद्र में से मोती निकालते हैं, ऐसे ही वो इरेगुलरिटीज निकालते हैं। आपको नहीं दिखती है। एक अच्छी बैंक, गुजरात की बहुत बड़ी बैंक, वो बहुत डिजिटलाइजेशन वाली है, बहुत पैसे खर्च करती है, सब कुछ करती है, नए नए मॉड्यूल सॉफ्टवेयर, फिर भी उसके आरबीआई इंस्पेक्टर आके कुछ ना कुछ निकालते हैं। उनको भी अजीब लगता है कि भाई हमसे नहीं निकलता, इनसे कैसे निकलता है। सो इट्स अ स्किल। ठीक है, नेक्स्ट। Bank guarantee, sorry, bank guarantees are not issued by many cooperative banks. Very few and large they issue financial bank guarantee. तो जहाँ पे होता है वहाँ पे उनके रिन्यूअल्स वगैरह देखने होते हैं। Then comes bills of exchange. Nowadays bills of exchange ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, तो फॉलो अप वगैरह होना चाहिए, ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। फिर देन है ECGCs, उसके हिसाब से, और मेन है DICGC का प्रीमियम पे किया है कि नहीं डिपॉजिट पे, वो जो डिपॉजिट्स में था वो एक इशू था। तो द इंस्टेंस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर्स, ऐसे कि उसने अपने पावर्स में नहीं किया तो दे हैव एक्सीडेड देयर डेलीगेटेड पावर्स। नेक्स्ट कम्स इंटरनल अकाउंट्स। एज आई सेड, इंटरनल अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Internal accounts of the bank are very important because RBI says you should not misutilize the internal accounts. Then there is a balancing of account, ledgers registered, included clean cash and general ledger is properly maintained by the branch. Next slide. A reconciliation of entries outstanding inter-branch. Again, it is repeating because it is very important. Because here RBI says you should not make any irregularity. Then early adjustments of large value entries. Large value entries जो रहती हैं उसकी adjustments वगैरह, then कोई किया हुआ है क्या उसमें, percentage check of calculation of interest, discount, commission and exchange. Deposit पे interest दिया है तो, loans पे interest लिया है तो, any discount commissions वगैरह जो हैं, और exchange, जब foreign exchange का जो करते हैं उसके लिए।
whether debits in income account have been permitted by the competent authorities. कभी कभी क्या होता है कि इनकम अकाउंट में डेबिट आ जाता है तो वो परमिट होना चाहिए उनकी अथॉरिटीज के थ्रू ही होना चाहिए। आरबीआई खुद स्टाफ के भी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो भी चेकिंग करती है, उनमें से भी इरेगुलरिटी मिलती है, तो कॉन्करेंट ऑडिटर को ये भी चेक करना है, सीओ के वगैरह अकाउंट और हायर ऑफिशियल्स के अकाउंट। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज थ्रू क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांजैक्शंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के जो भी आइटम्स हैं तो उनको देखना है कॉन्करेंट ऑडिटर को कि कितना पैसा कहां से आया, वेदर वो बराबर है कि नहीं है, और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली उनको डिटेक्ट करना है। आरबीआई कहती है कोई भी टेंडर, गुजरात में तो है ही, ऑल इंडिया ही होगा, 5 lakhs and above should be done by tender expenses. Next slide. Checks written, bill written, register and look into reasons. Number of checks written by one depositor or in loan account, चेक्स आते हैं या ईसीएस वो रिटर्न होते हैं तो उनके भी देखना होता है, और नहीं तो 138 वगैरह जो फाइल करने पड़ते हैं। अगर कस्टमर्स के हैं तो कस्टमर्स को खाली आपको मेमो देना है। देन कम्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, डीडीज एंड एमटीज, टीटीज। अभी ईसीएस, एनईएफटी, आरटीएस से इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। अदर आइटम्स दे हैव टू सी इज रिस्क कैटेगराइजेशन, रिस्क रिव्यू, केवाईसी, CKYC-RR, सरसाई में मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन, NESL में रजिस्ट्रेशन, लार्ज अकाउंट्स, एंड देन FIU-IND का CRR, अरे CTR, STR, CCR, NTR, 4 होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। STR नील और CTR का तो करना ही है। देन कम्स the branch has given proper compliance to the internal audit reports. Concurrent auditor को देखना है कि internal audit का reports में compliance बराबर है कि नहीं है। The customer complaints are dealt with promptly. जो कस्टमर आरबीआई से आई हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन से आई हैं या कहीं से भी आई हैं कंप्लेंट्स, तो कंप्लेंट्स डिपॉजिटर की हो सकती है और इसके बोरोवर की हो सकती है और पब्लिक में भी आ सकती है, तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए। एक बड़ी बैंक में आरबीआई ने आके उनको कहा कि आपका कंप्लायंस जो है कंप्लेंट्स का वो पूरा आपका डिजिटलाइजेशन नहीं है, आप कंप्यूटराइज कर दो और उसमें पूरा डेटा डालो कि कौन सी कंप्लेंट कब आई, कहां से आई, कब आपका इसका रिड्रेसल हुआ, कब जवाब दिया है। और उसके अलावा अनयूजुअल फीचर्स जो हो कोई सेंसिटिव एरियाज में, और तो उसमें 100% चेक करना है अगर 5 लाख के ऊपर की आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है। नेक्स्ट। देन अगेन कम इंटरबैंक इंटर ब्रांच अकाउंट। बहुत सारी बातें जो इंटरनल ऑडिटर देखता है, काफी चीजें कॉन्करेंट ऑडिट में भी रिपीट होती हैं, उनको भी तो देखना ही है। तो ये फिर स्टेट ऑडिट भी देखता है रैंडमली, आरबीआई का इंस्पेक्टर भी देखता है रैंडमली, 100% चेक तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट आता है, फिर कॉन्करेंट ऑडिट देखे, फिर स्टेट ऑडिट, फिर आरबीआई इंस्पेक्शन। ये इतना सारा इंस्पेक्शन एंड ऑडिट होने क्यों होता है? क्योंकि ये जो फंड्स बैंकों के पास है वो उनके अपने नहीं है, पब्लिक के फंड्स। तो आरबीआई का मेन क्या कहना है कि द अफेयर्स ऑफ द बैंक शुड नॉट बी कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। ये 3 लाइन में A to Z आरबीआई ने कह दिया है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन अफेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्टीमेटली उसका नुकसान डिपॉजिटर को जाए, क्योंकि बैंक के पास पैसे डिपॉजिटर के हैं, पब्लिक फंड्स हैं। बैंक जो है वो जस्ट लाइक अ ट्रस्ट है। आप एम्प्लॉइज तनख्वाह लेते हैं, स्टाफ तनख्वाह लेते हैं, डायरेक्टर अपना काम करते हैं, डायरेक्टर खाली उनको ओवरसी करना होता है, वो ट्रस्टी जैसे हैं, और मेन जो है वो डिपॉजिटर है, फंड्स उसके हैं। तो उसके लिए आप सबको, स्टाफ को काम करना है, बोर्ड को काम करना है। और ये सब इसलिए है क्योंकि वी आर डीलिंग इन फाइनेंस, कोई कमोडिटी नहीं है।
ये फाइनेंस है, सीधा पैसा है। जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग विथ अ फायर। एक बार गया, फायर में क्या होता है, एक बार गया तो जीरो, पैसा गया तो जीरो। ऐसा नहीं होता कि भाई मशीनरी है कि 50 लाख की 40 लाख मिलेगा या 30 लाख मिलेगा, पैसा गया तो जीरो, फाइनेंस जीरो हो जाता है। तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है। नाउ विल से पुअर परफॉर्मेंस इन हाउस कीपिंग, लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, कॉन्करेंट ऑडिट, ये सब इनको चेकिंग करना ही है कॉन्करेंट ऑडिटर को। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हैविंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इन्वॉल्विंग लेस अमाउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी कभी क्या होता है ट्रांजैक्शन, मैंने खुद देखा है एक बैंक में जब 59,000 का वो था डिमांड ड्राफ्ट का, भाई अभी तो डिमांड ड्राफ्ट कम ही निकलते हैं, पुराने टाइम में डिमांड ड्राफ्ट ज्यादा निकलते थे। तो क्या होता था, 49,000 के ही डिमांड ड्राफ्ट। सूरत सिटी फाइनेंशियल हब, मुंबई, अहमदाबाद, मद्रास, चाइना, बेंगलोर, बड़े बड़े कलकत्ता सिटी, दिल्ली सिटी, इसमें व्यापारी लोग आपस में 49,000 के कैश से लिए हुए डीडी एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। उस जमाने में 6 महीना उसका वैलिडिटी था, तो 6 महीने वैलिडिटी, जब वैलिडिटी नजदीक आता था तो जो परचेस करता था उसके पास जाता था। ये ट्रांजैक्शन में घूमते थे। और एक ये आरबीआई तभी क्या कहती थी, 49 या 45 का आप एक ही पार्टी ने कितने डीडी इशू किए थे, किए हैं, वो हम पकड़ते थे हम पुराने टाइम में। अभी ये इशू कम होता है, लगभग कम हो गया है, धीरे धीरे और कम होगा। तो क्यों, बिकॉज एनईएफटी, आरटीजीएस और ये सब आ गया है, और डीडी का भी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया। पहले तो डीडी के चार्जेस में बहुत सारे बैंक को बहुत सारा पैसा इनकम, बहुत प्रॉफिट होता था। नाउ इफ एनी एडवर्स रिमार्क इज required to be given, हाँ, concurrent auditor should give reasons therefore. concurrent auditor ने कोई एडवर्स रिमार्क दिया है तो उसको रीजंस देना है। concurrent auditor को आरबीआई का इंस्पेक्शन का जो कंप्लायंस है उसका जो पैरा है वो भी बाकी है, तो वो भी देखने का है। इट शुड बी एज आई सेड कि 4 लेयर हैं, इंटरनल, concurrent, देन स्टैट्यूटरी एंड आरबीआई इंस्पेक्शन। तो आरबीआई इंस्पेक्शन तो सेपरेट है, वो तो अथॉरिटी है, बाकी सब जो वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटरनल एंड कॉन्करेंट तो ज्यादा ही इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आई मीन कि भाई ऐसा होना चाहिए कि वो जो कॉन्करेंट ऑडिटर है, तो इंटरनल ऑडिटर ने जो देखा है उसमें से जो डिटेक्ट हुआ है तो वो रिकरेंट तो नहीं हुआ है, रिकरेंस फिर से तो नहीं हुआ है, रिकरिंग नेचर नहीं होना चाहिए। तो स्टेट ऑडिटर को भी ये एक्चुअली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट में भी देखना है कि कंप्लायंस रिकरेंस होता है क्या। नेक्स्ट स्लाइड। रवि। यस सर। हाँ, बस ये इसके लिए कॉन्करेंट ऑडिटर मेक देमसेल्फ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, ब्रांच लेवल बैंक एंड देयर सजेशन एंड ओवरकम देम। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आरबीआई के इंस्पेक्टर का रोल एडवाइजरी है, पर अगर कोई अच्छा आरबीआई का इंस्पेक्टर आता है और कुछ अच्छी एडवाइस बैंक को देता है तो दिस इज गुड, वेलकम। ऐसे ही कॉन्करेंट ऑडिटर को, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि जैसे कुआं होता है, वेल, सीओ जो है वो एक ही बैंक में है, वेल में है, ठीक है, तो दूसरी वेल से कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करता है, 50 बैंकों में जाता है, 25 बैंकों में जाता है, तो 25 बैंकों का अनुभव। अभी जैसे रवि ने कहा कि मैं 50 बैंकों के साथ रिलेटेड हूं, तो मेरा 50 बैंकों का अनुभव क्या होगा, इस बैंक में ये कमी हो रही है, इस बैंक में आरबीआई ने ये ढूंढा है, तो मैं क्या करूंगा, जो कमी आरबीआई ने जहां ढूंढी है बाकी के ब्रांचेस को, बाकी के बैंक्स को मैं कह सकता हूं कि आप भी ऐसा कर दीजिए। सो कॉन्करेंट ऑडिटर जब भी 25 नहीं तो 5 बैंकों में जाता है, ऐसे ही अदर यूसीबीज और डिस्ट्रिक्ट बैंक और बीओबी और एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, अगर ऑडिटर को अच्छा अनुभव दूसरी बैंकों का ऑडिट करने का है तो दूसरी बैंकों की अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकता है कि ये बैंक में ऐसा प्रॉब्लम आता है, इससे अच्छा ये करो। वो शुड बी विद इन द पॉलिसी ऑफ यूसीबी। आई डोंट से कि आउटसाइड द पॉलिसी और आउटसाइड द आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, इट शुड बी विद इन एंड शुड बी अफोर्डेबल एंड रीचेबल। तो कुछ भी अच्छी बात, कोई भी एडवाइस, गुड एडवाइस should be welcomed by the urban bank from the concurrent auditor। अगर वो सजेशन अच्छा देता है, अगर उसको माइनस लगता है तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए लिखने की। ऐसे ही इंटरनल ऑडिटर को भी हिम्मत होनी चाहिए बैंक के विरुद्ध लिखने की। और उसके बाद ऐसा है कि इंटरनल ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
ताकि वो बड़ी हाई लेवल का हो तो अच्छा है। अर्बन बैंकों में जो यूनिट बैंक ब्रांच है, जिसमें ओनली 1 CEO and 1 officer or 2 officer, 2 clerks, 8-10 का स्टाफ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम द इंटरनल स्टाफ। सो आई रिकमेंड देम कि आपका जो रिटायर हो गया है स्टाफ, उसको ही आप लाओ, क्योंकि आपका स्टाफ है ही नहीं। एक सीईओ है, कई बैंक में सीईओ बोलता है साहब मैं क्या इंटरनल ऑडिट कर सकता हूँ? मैं कहा आप सीईओ हैं, आप कैसे इंटरनल ऑडिट करेंगे? और एक ही ऑफिसर है जो डिपॉजिट भी देखता है और एडवांसेस भी देखता है और रिकवरी भी देखता है। जो यूनिट बैंक ब्रांच है, जिसकी डिपॉजिट 15-20 करोड़ है, 5 करोड़ की एडवांसेस है, 20-22 करोड़ की साइज की बैंक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंप्लाई विद द इंटरनल ऑडिट एज पर आरबीआई का जो सर्कुलर आया था। आरबीआई का सर्कुलर एक और आया था 21 में, तो उसमें तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बोलता है, लेकिन वो बड़ी बैंकों के लिए हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। कई बैंकों में तो ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है। आगे मैं आऊंगा ईडीपी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। तो ईडीपी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट जो यूनिट बैंक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट such lines like audit, then investment, or then loans and loan recovery. One man show है कई बैंकों में, very small banks, but unfortunately or fortunately number of such banks are very large. Number of such banks are large in number in India. Now if bank appoint external audit, तो terms conditions appointment के और rotation is a must. कंकरेंट ऑडिटर के लिए आइदर ब्रांच का रोटेशन करें या तो every 2-3 years you rotate another, you give concurrent audit work to another firm. Auditor firm will be responsible for any omission or commission in respect of transactions seen by them. Now पहले आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, रिसेंटली आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया ऑडिटर के ऊपर भी, और बहुत हाई रेगुलेटरी not detected by concurrent auditor is also reported by RBI to their ICAI Delhi. ऐसा सुनने में आया है। नेक्स्ट स्लाइड। For any serious act of commission or omission is noticed in the working of the concurrent auditor, bank may consider terminating their appointment and may be reported, as I said. आरबीआई कहती है कि अगर आपके यहाँ concurrent auditor सीरियस मिस्टेक करता है, फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड ही शुड हैव डिटेक्टेड बट उसने डिटेक्ट नहीं किया है, और वो आउटसाइड फ्रॉड है, स्टाफ ने भी नहीं किया है, अगर स्टाफ ने किया है तो भी, तो ये सब बातें जो है, वट एवर दीज थिंग्स आर देयर, तो you should think cancelling, terminating that appointment immediately and going for another concurrent auditor and report to RBI if you require to. Then bank prefers its own officer, then he should be well experienced, senior and independent. लगभग urban बैंकों में concurrent audit is done by outsider. Most of the banks, majority of the banks. Internal audit, majority of the banks are doing internally by internal staff. Many banks have given internal audit function to auditor, separate CA firm also, externally. Now will come that it would be desirable and necessary to rotate the auditors with that internal auditor, as I said. Next slide. Reporting system. The reporting system ऐसा है कि internal audit, concurrent audit should directly report, advisable, RBI also says, to audit committee of board or chairman. Then the report should be minor irregularities जो होती हैं वो तो वहीं पे ही हो जाती हैं ब्रांच मैनेजर पे. Then if not rectified within a reasonable period of time, a week, these may be responded to the HO. अगर जो minor things हैं, लिखने जैसी नहीं है, तो वहीं पे हो जानी चाहिए, नहीं होती हैं 7 दिन के अंदर, तो एचओ को रिपोर्ट करना है. If the auditor observe any serious irregularity, these should be straight away reported to HO immediately. Many things like fraud should immediately, he should bring it to the notice of chairman, audit committee or CEO immediately. बैंक में इंस्टीट्यूट एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ फॉलो फॉर रिपोर्ट्स ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर. बैंक को अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए कि आरबीआई का रिपोर्ट, कंकरेंट ऑडिटर का रिपोर्ट कब आएगा,
कब उसका फॉलो अप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हाउ मेनी डेज वी विल कंप्लाई एंड फॉलो अप करेंगे, एंड व्हेन इट विल बी क्लोज. नेक्स्ट, the attempt should be to integrate the Concurrent Audit with other system of internal audit. As I said, integrated होना चाहिए थोड़ा. ऐसा नहीं है कि साथ में होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए. कई बैंकों में तो क्या है कि एक ही दिन में इंटरनल ऑडिट होता है, एक ही दिन में एक्सटर्नल ये कॉन्करेंट ऑडिट होता है. इट शुड नॉट हैपन. आइदर इंटरनल ऑडिट फर्स्ट हो जाना चाहिए, फिर कॉन्करेंट ऑडिट आए, या कॉन्करेंट ऑडिट हो जाए फिर इंटरनल ऑडिट आए. कई बैंकों में तो क्या होता है साहब कि इंटरनल ऑडिट कॉन्करेंट ऑडिट जो करके गया है उसका ही कॉपी मारता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स लेता है. कभी कभी कॉन्करेंट ऑडिटर इंटरनल ऑडिट का पॉइंट्स मारता है, पर ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स ही मारना है. उसमें जो सीरियस थिंग्स हैं वो पॉइंट आउट करना है, और टाइम ड्यूरेशन देखना है कि इंटरनल ऑडिट अगर 15 दिन पहले दिया है तो उसका फॉलोअप क्यों नहीं हुआ है. Then the entire system of audit inspection and their follow-up is to be properly documented, and the performance integration audit system to be reviewed from time to time. Board Audit Committee has to review all the reports once in a year at least. Internal auditor का भी हो और उसका भी हो. ठीक है सर. The entire system of audit inspection follow-up properly documented. Documented means सब writing में होना चाहिए. Even closure should be also in writing. Am I audible? Hello. Yes, sir. Audible. Yes, Yes, sir. sir. Audible. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. वो अगर issue है. So कपूर सर, एक थोड़ा एक मेरा कमेंट था कि ये रिपोर्टिंग सिस्टम वाला ये जो टॉपिक है ना वो खत्म करने के बाद अपने आप ये वेबिनार को नेक्स्ट वीक में, या आप जब अवेलेबल रहेंगे तब नेक्स्ट करेंगे, तब तक ये सिर्फ रिपोर्टिंग सिस्टम वाला है ना सर, हाँ हाँ, वो अपने कंप्लीट कर देंगे. ओके 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 हाँ. ओके सर. ओके, बस हाँ, 2 सर. मिनट. यू आर ऑडिबल. हाँ ओके. अभी नेक्स्ट देन ईडीपी है. ओके, नेक्स्ट करेंगे रवि. यस सर. तो सर वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे. अभी टाइम भी तक हो गया. यस, ओके, अभी तक सर जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है, एनीवन है ना, हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, देन यू कैन आस्क अस सर. सो नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन. सो अभी जितने भी स्लाइड बाकी है वो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में या सर की अवेलेबिलिटी के साथ करेंगे सर. थैंक यू सर. यस, तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे. कोई क्वेश्चन है? बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किए थे बीच में. यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन. सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर. Hello. यस सर. See, after the new circular, draft circular, I think that the FSWM status will no longer be in existence. What do you say? good circular you are quoting. There is a draft circular regarding There's a- opening see, of branches and all. We yes, I have gone through the draft circular. You go through it, and whatever suggestions you have to send to RBI. It is not implemented, sir. I do understand. What I Uh-huh. mean to say is that FSWM status will no longer be required for any cooperative bank, UCB. But after In spite that of circular- पहले आपको क्या सर- था, हाँ पहले क्या था कि भाई अगर मान लो कि कोई पेनल्टी लग गई है for हाँ. 2 years, that status was no longer for that bank. It didn't come into FSWM status, and that is why they couldn't open branches. Okay. Now, because of this draft circular, even if a bank is penalized, they can open branches. Okay, but Is it true? it's true. Even I say many a bank have been penalized. They have also got branches through ABP. See, sir, No, that is a different thing. I am Now clarifying. here, I am clarifying it. Penalization is different thing. Financial soundness is different thing. See, in Gujarat, a good bank was penalized, but they got 2 branches.
in the same year they paid amount after show cause notice, but they got 2 branches. Whatever you are saying is correct. I absolutely agree with you. But in time to come, If the bank is not an FSWM bank, even though that bank was not circular- financially sound, well-managed bank, they were not given Yeah. any letter from RBI. They got 2 branches. So financially sound they are. how could they get? How They could got. they get? They got. How could they got? Sir? Yes. That is news because once you are penalized and you don't get that status, you can't open branches. Through ABP they That got. is what the circular states. Through ABP they got. Acha. See, circular you are quoting is, see sir, financially sound, well-managed bank, you can open on your own without ABP. There was a circular where 2 types of you can open branches. One through financially sound, well-managed bank, another through ABP. Okay. Hello. Got it. Yes, any Yeah, other Ravi, banks? Any रवि question? Yes, sir. इनको मेरा मोबाइल नंबर दे देना, उनको बोलना मेरे से बात करें, मैं बताऊंगा. ठीक है सर, ठीक है. Okay. Sir, I have one query about risk-based internal audit. May I ask now? Yes, sir. Sir has given the information about risk-based internal audit, but in most of the banks, it's happening that the concurrent audit and internal audit is continuously becoming that the duplication of work is there. And now RBI is giving the stance that there should not be the duplication of work in internal audit and the concurrent audit. And as per my knowledge, as per my perception, the risk-based internal audit having to define the different types of risk in that bank or the branches. I'd like the credit risk, I'd like the operational risk and different types of risk. In the form of highly critical risk is there, high risk is there, moderate risk is there, low risk is there. And as per my perception, the risk-based internal auditor should have to give the report in the format that the branch is having a moderate risk, low risk or high risk is there. And the management has to give, or the audit committee has to give more concentration on the point which are mentioned as like a high risk is there. So I want the suggestion from sir about the reports of risk-based internal auditor. See, reports for risk-based internal auditor. Now I'm telling you, sir, your bank seems to be having asset size of more than 500 crore. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Just Huh? we have started because our asset size is just become 520 crore in 30%. Okay. Okay. Now, risk-based internal audit circular 3rd February 2021 is applicable to you. Okay. There's itself, it is mentioned about this. Now, many modules are available in the market where you can go for risk-based internal audit. Another thing I'm telling you, what in the circular which I just now discussed about 1st July 2015, I expect RBI will come out with master direction on this also for small banks. Less than 500 crores, there is a duplication. I agree with you, 101% I agree with you. As I told you, कि वहां पे वो कॉपी करते हैं एक दूसरे की. Concurrent audit, internal audit की कॉपी करता है. Duplication है, मैं बोला, agree हूं मैं सर. But now since asset size is more than 500 crores, so there will not be any duplication. Because now risk-based internal audit, as you said, as per the circular, you have to see the risk level of the branch and then come out with the total risk, average risk, or the risk for bank. So internal audit risk base is different from simple internal audit. As of now, up to 500 crore, this circular is applicable. As for you, your circular dated 3rd February 2021 is applicable for risk-based internal audit. So you have to go for any module. Many cooperative banks have
gone for modules available with some vendors. Many have developed in their in-house Excel sheets for that, and many federation, particularly Gujarat Cooperative Federation, they also come out with some solution in the Excel sheet of form. So I am telling you, it takes time. RBI is not that much, you say, very stringent or strict about implementation of risk-based internal audit. As of date, RBI is mentioning a para regarding this, whether you introduce or not. Many cooperative banks above 500 crores have introduced, but they are at different level. Some are at preliminary level, some have developed good their format, and some have implemented modules available from the bank. It is up to you, and you can go for as you wish. You can start at your own Excel sheet, but Excel sheet and preparation and all these things, as I say, Federation has come out with some Excel formats, but that is a manual. So many cooperative banks are going for online or digitalized and you say available module which can do digitally. Maximum, minimum man can intervene. Manual minimum. So it is up to you, sir. You have to prepare a format, or you can ask for help from any cooperative bank which has prepared a format. I can also share whatever format I am having with you. Yes, sir. It is expected. If you have any format, can you please share on or please send us the PPT about it and including or. Okay, sir. Because as well as pressure, and in case of entering in risk-based internal audit, because just we have covered 520 crore asset size, we are in this field, and therefore we require some advanced guidelines regarding the same, and therefore okay, format that will be beneficial for us. Okay, okay. You are from Dapoli Urban? Yeah, I'm from Dapoli Urban Cooperative. Okay, okay. Dapoli is where? Maharashtra? Yeah, in Konkan, sir. Konkan area, sir. Konkan. Konkan area. Yes. Konkan. Yes. Yes, sir. Just okay. So sir, after the session, next session completed, we sharing the PPT because there is a 29 slides of the presentation. So after the session 2, we share the PPT, full PPT to your banks. Sir, अभी किसी और बैंक को कुछ क्वेश्चन है regarding आज जो भी हमने डिस्कशन किया वो related, so you can ask that. Sir, my request is if sir is having such a format about risk-based internal audit, you may please send us. Sure, sir. We'll send, sir. No Yes, problems. Sir. Thank you, sir. Thank you. Anyone? कोई क्वेश्चन है कि ये सेशन हम कंप्लीट करें? I think so. There is no question from banks. So next week में हम लोग वापिस एक जो अभी सेशन हमारा कंटिन्यू ही रहेगा, ये जितनी स्लाइडें हमें कंप्लीट करनी है वो करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन अभी आज जो डिस्कशन किया उसका अगर कुछ है, और हम लोग YouTube पे भी अपलोड करने वाले हैं दिस वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको कहीं पे वापिस एक बार देख के आपको वापिस कुछ अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो सेशन 2 में हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीक में. सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. और ये पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद हम पीपीटी आपको शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक में, जो सेशन है वो कंप्लीट करने के बाद. Thank you Kapoor sir for joining and your valuable time. So हम लोग नेक्स्ट जब भी हमारा सर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग का एक डेट एंड टाइम फाइनल होता है, then I will share again the meeting link on your email address so we can connect and continue the session. Thank you sir. Thank you all. Thank you all. Thank you all. Thank you for. हेलो रवि सर. Yes sir. सर ये YouTube पे कौन से लिंक पे मिलेगा या सर अभी आप अगर मैसेजिंग में जाइए तो वहाँ पे हमने वो लिंक दिया हुआ है. आई एम सेंडिंग अगेन. यस, आपको मिला सर? वापिस मैंने शेयर किया.
सर मैसेज बॉक्स मिल में गया। आप जाके जो अभी लिंक मैंने शेयर किया है वो लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारा नया सेशन हम लोग करते हैं या कोई भी ऐसा अवेयरनेस का कुछ हमारा होता है तो हम लोग अपलोड करते हैं, तो यू गेट द नोटिफाइड कि कुछ अपलोड हुआ है नया सेशन। ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। और कोई किसी को क्वेश्चन है तो सर, यस श्योर सर, आप अपना ईमेल आप डाल दीजिए, जिस मेल पे आपको स्पेशली चाहिए ये पीपीटी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो हम लोग शेयर करेंगे वही ईमेल पे सर आपको।